हाय गाइस, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय चैनल। फेस्टिवल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड दिवाली बस आने ही वाली है। तो दिस वीडियो इज अबाउट दिया डेकोरेशन विदाउट विच वी कैनॉट इमेजिन दिवाली। सो हियर आई एम टू शो 4 डिफरेंट वेज ऑफ डेकोरेटिंग द दियास। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम दियों को पेंट कर लेंगे और फिर डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। इन द फर्स्ट आइडिया आई एम यूजिंग बिंदी। तो जो भी बिंदी आपके पास हो, आप उनको यूज करके अपने दिया को डेकोरेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। गाइस, इस तरह के डेकोरेटिव दियाज बाय भी कर सकते हैं, बट जब आप फेस्टिवल्स के टाइम पे कोई भी डीआईवाई करते हैं, डेकोरेशंस करते हैं, तो आप अलग ही फेस्टिवल वाइब्स क्रिएट करते हैं। Also, these activities help kids to develop their motor skills, innovative idea skills, enhance their creativity skills and their aesthetic sense. तो बच्चों को आप ज़रूर encourage करें कुछ innovative करने के लिए। मैं यहाँ acrylic liner भी यूज़ कर रही हूँ, but that is completely optional. आप दिया को पर्ल्स या स्टोन से भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ हाफ कट पर्ल्स यूज कर रही हूँ। अगेन, जो भी स्टोन्स, पर्ल्स, ओल्ड नेकलेस के मोती आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप उन्हें यूज कर सकते हैं एंड दिया डेकोरेट कर सकते हैं। आप डोरी यूज करके भी दिया डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ डोरी को हाफ दिए पे पेस्ट किया है।
it is looking so beautiful. आप दिया डेकोरेट करने के लिए लेस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लेस को दिए के दोनों साइड्स पे लगाया है एंड एक्रिलिक कलर से डिज़ाइन बनाया है। आपको ये दिया डेकोरेशन वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Hope you liked the video. Thank you for watching.